Friends, this is the second part of the chapter Shadow from your book My English Garden. So children, in the last video we saw that Jigmet got some money from his grandfather when he died, and finally he took money and he went to the Gojia Pasha. Why did he go to Gojia Pasha? To learn magic, right? So Gojia Pasha, what he says to him, let's see. Now we'll see in this video. What he says, I'm willing to make you my pupil. Pupil means to student, I had told you in the last video, and will means desire. So जो पाशा है, he also says in return that yes, I would like you to be my pupil. मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे शिष्य बन जाओ. But what he says, but I'm a strict teacher and my pupil must obey every rule. What he says that I'm a strict teacher and I want my pupils to follow my rules, to obey my rules. वो कहता है मैं चाहता हूँ कि जो मेरे whatever I ask them to do, they should do blindly. वो मेरी हर बात को माने. Everyone wakes up at 6 o'clock in the morning. Classes start at 8 o'clock sharp. I give a lunch break of only half an hour, after which there will be studying till 6 o'clock in the evening. So now in this paragraph, Gojia Pasha is telling about his schedule. How does he go about the teaching? कैसे वो बच्चों को पढ़ाता है? How does he teach magic to the students or to his pupils? वो कहता है that first thing, you all pupils have to stay with me. उनको मेरे साथ रहना पड़ता है. And they should wake up by 6 o'clock. वो 6 बजे जग जाएं. And by 8 o'clock their class, sharp 8 o'clock their classes will start of learning magic. उनकी मैजिक सीखने की जो क्लास है 8 o'clock पे स्टार्ट हो जाएगी. एंड देन फॉर हाफ एन आवर ओनली आई गिव देम लंच. उनको आधे घंटे में बच्चों को देता हूँ लंच करने के लिए. एंड आफ्टर देन द क्लास विल गो ऑन टिल 6 o'clock. तब वो शाम को 6 o'clock तक क्लासेस चलती रहती हैं. देन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ व्हाट जिगमेट सेज, ही सेज दैट्स फेयर इनफ. वो कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है. फेयर इनफ का मतलब है बहुत अच्छा. आई हैवंट टोल्ड यू अबाउट माई इम्पॉर्टेंट रूल. नाउ मैजिक पाशा इज सेइंग समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. लेट्स सी व्हाट ही सेज. ही सेज when the term is over, the last pupil to leave the school will belong to me, body and soul, and be my slave for the rest of his life. Now a very serious thing he's talking about to Jigmet. जिगमेट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही गंभीर बात वो कहता है. एंड लेट्स सी व्हाट डज ही रिप्लाई. पहले तो देखते हैं. फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट डज ही से. इट मीन्स फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग्स. हियर term means duration, time, and leave means छोड़ना किसी चीज़ को, to drop. and soul का मतलब होता है आत्मा, जो स्पिरिट जो हमारे अंदर होती है. and slave means a servant who does each and everything for his or her master. वो हर कुछ काम करता है जो उसका मास्टर बोलता है. रेस्ट ऑफ हिज लाइफ का मतलब है उसकी बाकी बची हुई ज़िंदगी. फॉर रेस्ट लाइफ इट मीन्स उसका जो रेस्ट बची हुई ज़िंदगी होगी. Now let's understand the meaning of this paragraph. So he says to Jigmet that when the term is over, when you are through with the course, your duration is over, you have learned all the magics, what you need to do? First thing you need to do is that द लास्ट प्यूपिल, जो सबसे लास्ट वाला शिष्य है,
will have to leave the school will belong to me. Body and soul and be my slave for the rest of life. It means वो कहता है कि जो सबसे लास्ट का जो प्यूपिल होगा, he or she will have to leave his body, soul, and along with these two things he and she will have to be my slaves. उनको उसको मेरा नौकर, मेरा गुलाम बनना पड़ेगा for rest of the life, पूरी ज़िंदगी भर. So how is it possible, children, ना, that if we suppose if we are coming to school, हम स्कूल में पढ़ने आते हैं and our school demands us to stay here forever, कहीं मत जाओ, अब उसी स्कूल में रहो. So will that be fair? वो अच्छी बात होगी. And will you agree? Of course we will not agree, because this is really unfair. So in return what he says, what Jigmet says, he says that's not fair. बिल्कुल गलत बात है ये, वो उसे कहता है दैट्स नॉट फेयर. स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ फ्रेज विच यू कैन यूज़ इन योर डेली लाइफ. दैट्स नॉट फेयर का मतलब है बिल्कुल गलत है. सो जब कोई बात आपको सही ना लगे और आपको लगता है बिल्कुल गलत बात है, तो आप कह सकते हैं दैट्स नॉट फेयर. और अगर कोई सही बात कहता है तो आप कह सकते हैं दैट्स फेयर अनफ. टेक इट और लीव इट, सेड गौजिया पाशा. अब नाउ एज Jigmet says this line, that's not fair, Pasha says in return, वो क्या कहता है? Take it. It means he returns his money and says, you can leave now. I will not teach you any magic. It means he refuses teaching him magic. वो मना कर देता है. वो कहता है take your money or you can go from my place. तुम यहाँ से जा सकते हो. Now I will not teach you because you don't agree to my conditions. If you don't like my rules, I won't teach you. Now he says that if you don't like my rules, अगर तुम्हें मेरी बातें, मेरे rules, मेरे नियम पसंद नहीं हैं, you may leave now. I will not teach you. मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा. But Jigmet was determined to become a magician. But जो Jigmet था, he was really determined person, determined boy. He wants to be a magician like Gojia Pasha. वो उसके जैसा बहुत बड़ा magician बनना चाहता है. So finally what he says, we'll see in the next video. Okay, so now I'm going to ask you some question from these two paragraphs just to confirm whether you have understood or not. So for today your question is, what is the timing of classes? Yes, or we can say when the classes are supposed to be started. कब classes magic की classes कब शुरू होती हैं according to Pasha? Yes, again pause the video, answer and then move ahead. Now next question is that what does he do, what this magician Pasha do in the evening by 6 o'clock till 6 o'clock? क्या करता है 6 o'clock तक? Yes, again you need to answer. Okay, now next question is, what is the important thing Pasha tells to Jigmet? Jigmet से कौन सी important चीज़ वो बताता है? Do you agree to Pasha with Pasha? क्या आप पाशा के साथ agree हैं? Do you think whatever Pasha has said to Jigmet is right? If yes, why? If not, no, why? What do you think? What do you think Jigmet will learn magic from Gojia Pasha? क्या वो Gojia Pasha से अब magic सीखेगा after knowing the very hard condition, बहुत
एक हार्ड कंडीशन को जान करके क्या आपको लगता है कि जिगमेट उससे सीखेगा? एंड इफ़ यस, वाई? इफ़ नॉट, नो, वाई? ओके, द लास्ट क्वेश्चन, टेल एनी वन ट्रेट ऑफ जिगमेट। जिगमेट का एक ट्रेट बताइए, एक गुण बताइए जो कि विच इज़ एक्सप्रेस्ड और विच इज़ फाउंड इन दीज लाइन्स, जो कि इन लाइन्स में आपको दिखा है। व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही इज़, वो कैसा बच्चा है? इज़ ही अ कावर्ड? इज़ ही अ लेज़ी बॉय? इज़ ही पैशनेटेड? और इज़ ही अ गुड लर्नर? So what do you think, what kind of personality or what kind of nature this boy has got, right? Okay, children, thank you so much. This is for today.